All right. Welcome to all the parents. As I was just saying, give us just another minute or two and we will get started. Parents are joining in. So just bear with us for another minute or so. Thank you so much. I would request all of you to please keep your uh, videos on but muted microphones. Riddhi, can you take care of that? Yeah, I will. All right. Um, Here we are, just another minute. Parents, thank you so much for joining again on this wonderful Friday evening. And we are very, very excited to bring a very exciting topic to you today. Maybe we can wait for another minute, Riddhi. What do you think? Yes, let's wait for one more minute. I'm hoping the parents are joining. Thank you so much, parents, for joining in. We do have parents coming. I'm just going to admit all of them. Yeah. All right. All right. Good evening, all of you. My name is Dr. Shivani Pandit. I am the founder of Samarthya. I am a special educator and I have been working with children with autism and intellectual disabilities for the past 30 years. We are back here once again with our Samarthya signature program, Swayam, in collaboration with SNCC Rehab Foundation. And I'm very pleased today to welcome you all. If we can go on to the next slide, Riddhi. I will just take 1 minute to introduce Samarthya, an organization, so that you know about what we do. But a lot of you are probably already know about Samarthya, and maybe there are some parents who are new today. So, for those who are new, I would love to share a little bit about us. I promise I won't take more than a minute. And for those of you who are already have heard this information, I'm sorry, just bear with me once again. Samarthya is a non-profit organization that is providing services to children with autism and intellectual disabilities online, as well as through our Family Resource Center in Pune. We provide resources to families that are child focused, meaning one-on-one interventions, group sessions. We run the Club Ananda, which is a therapeutic recreational club. And we also run our UDAN NIOS program online as well. We also provide a lot of parent focused interventions, which is parent training, which we offer online, as well as one on one coaching for parents so that parents are feeling more and more empowered as they work with us. We also work with schools. We train teachers in various schools. We provide inclusive storytelling sessions. And Riddhi, if you can just keep admitting all the parents, I'm seeing quite a few of them join in. Yes, yes, I've Uh, admitted all of them. so we are very excited as an organization to be able to bring these monthly sessions for you every single month on various different topics. And this is in collaboration, of course, with SNCC Rehab Foundation. If you can go on to the next slide, please. Uh, and most of you probably already know about SNCC Rehab and Harshali Khache, who is the founder of SNCC Rehab Foundation based in Nagpur. Can you please go on to the next slide, Riddhi? Currently, SNCC has many areas of work. They also work alongside Samarthya on many of the parent workshops that we do, awareness programs, activities, and various empowerment activities for parents of children with special needs. Can you go on to the next slide?
Harshali was unable to be here today, but most of you know her, and I always like to thank her for her partnership in bringing these Swayam webinar sessions to all of you every single month. And here we are today with a very exciting topic and a very exciting guest, actually two guests. So I would love for Riddhi Dedia to introduce herself and our guest for today, and let's just jump right into the session. Yes, thank you so much, Dr. Shivani. I am very excited for this session. Today's session is going to be about how animals can be used as pets and how they can be therapeutic. I am hoping you guys can hear me. And my audio is great given the internet? Okay, great. So I am very excited to welcome our founder of and the speaker for the day today, who is Mrunal Salunke. Mrunal, can I just ask you to say hi to all of us? She's the founder of Therapause, and along with her, we have Junior, who is our certified therapy dog. Can we just have Junior here? I'm gonna put the spotlight on you, Mrunal. For sure. It's Junior, already. he's just he's just taking a nap and he's right here watching over what we are talking about him. But really happy to be here and can't wait to Yes. start. Thank you so much, Mrunal. So Mrunal is the founder of Therapause, and she's a trained animal-assisted interventionist, and she is also a canine behaviorist and a mental health therapist. She's acquired her degree in master's in psychology, clinical psychology, and she has deep experience in both psychology and animal therapy. She has worked with neurodivergent children. She understands the emotional challenges that children go through. And can I please ask everyone to be muted? Thank you so much. And her work also combines evidence-based practices, therapeutic evidences, and she's the lead team member of Therapause. It's a pleasure to have you, Mrunal, here, and we can't wait to hear how a pet and not we don't have to need you don't need pets to have the therapy that you're going to share. We can't wait to have you started and have you talk. Before you start, Mrunal, I'm just going to go to the next slide. So this is our topic for today, understanding animal connections, even without a pet, which is more interesting. And parents, I really want to bring it to your attention about our contact information. Please feel free to take a screenshot so that you can use it whenever you want. We'll, of course, keep sharing this information in our chats as well. So I'm going to give 3 seconds to the parents in case if you want to just take a screenshot of the contact details, and then we will hand it over to Mrunal. Okay, so yes, Mrunal, thank you so much again for joining in. I'm going to have you start sharing your screen, and over to you. Amazing. Let me just share my screen. It's amazing to see the parents and all the professionals still join in. Are you able to see it? Parents, can you all just put it in the chat if you all can see the presentation? No, it's not visible yet. Oh, it is. Yeah, I can see it now. Everyone, parents, I think it's saying the screen is being shared. Okay, I guess now all of us can see the screen, correct? Just give us a thumbs up if you all can. Okay, perfect. Mrunal, you can get started. Yes. So I would just like to thank everyone who has taken the time out and come here to really know and understand about a topic which is so new.
It's really good to see that people are curious and interested. This is Junior. He's just sitting up and he wants to be in the session as well. So thank you, Riddhi. Thank you, Samartha Foundation, for giving me this opportunity. And I would like to get started right away. So just to give you a little bit of more information about me, I'm Ronal Sarunkhe. This is my company, Therapause. And what we do is we bring the healing power of animals to all the houses and all the schools and all the corporates, offices, senior citizens' home, you name it. So I did my master's in clinical psychology, and then I also did dog training for about 3 years, trained 150 dogs. तो दोनों को थोड़ा मिक्स करके I was just trying to understand what can we do, because animals have always got me out of my deepest times. So I know कि बहुत लोगों के पास animals नहीं होते, pets नहीं होते घर पे, but still they will like to go to their friend's house और street dogs के साथ खेलते हैं या street cats के साथ खेलते हैं. So I wanted to do something where I can bring these people the joy of connecting with an animal. So that's how I started Therapause. And this is my team. It's a very different team. And this is Junior. So Junior is, you saw his half body some time back. So he is the main reason that I started this. Then we have Tintin, who is a therapy cat in training. So he's right now learning how to be an amazing therapy cat. Then we have Kobe, who is a golden retriever. He's about 3 years old. He is extremely amazing with children and adults. And then we Mrunal, have sorry to interrupt you. Just do a little bit of English and Hindi. We have parents from all over India. So if possible, if you can just do thoda Hindi, thoda English, that will be great. Thank you. Done. I'll keep that in mind. So Tintin, फिर Kobe, and we have Zoe. So Kobe is a golden retriever. Junior जो है वो एक English cream retriever है. So he's white in color. So English cream retriever. And then we Parents, I would ask you to please stay muted so that we can have a smooth presentation. I please request you, in case if you have any questions, feel free to write it in the chat box. We are going to address each one of them. Thank you so much. Yes, Ms. Nodal, please continue. Yes. So Zoe is a beagle. Santa's favorite, उसके collar पे लिखा है. She's really a very good dog and she gets along very well with senior citizens. So that's how कि सब animals अपने अपने way में लोगों की help करते हैं. And these are not just pet animals. They are trained. They are trained for 1 year, 6 months, 2 years. वो जब से puppies थे, जब से छोटे थे, तब से उनको train किया गया है. And they have given an exam. So जैसे हम अपनी डिग्री के लिए एग्जाम देते हैं, वैसे ये सब एनिमल्स ने एक एग्जाम दिया है या देने वाले हैं. एंड वंस दे हैव गिवन द एग्जाम, फिर वो जाके सर्टिफाई होते हैं एज इंटरनेशनली सर्टिफाइड थेरेपी एनिमल्स. सो अगर आपके घर पे पेट हो तो इट इज नॉट ऑलवेज अ थेरेपी एनिमल, बट थेरेपी एनिमल जो होते हैं दे आर ट्रेन्ड एंड दे हैव टू बी सर्टिफाइड एग्जाम देने के बाद. So that's just a little bit about my team of animals. Coming to what we do, तो ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आखिर क्या है एनिमल असिस्टेड इंटरवेंशन. तो बहुत नया है, ऐसा नहीं है. दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स इन द यूके, यूएस, इंडिया में भी 10 सालों से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये काम कर रहे हैं. एंड basically it is structured activities that involve certified therapy animals. तो ये जो मैंने कहा certified therapy animals, ये बहुत important चीज है. It's not any animal or it's not any dog जो बहुत friendly है. It is certified. तो therapy animals होने के लिए ये बहुत important है. और फिर a person's physical, emotional and mental well-being. तो तीनों spheres को हम साथ में grow कर सकते हैं. We can help a person improve all these areas with the help of animals. Moving on, so
थेरेपी तो इंटरवेंशंस के बहुत टाइप्स होते हैं, जैसे एक्टिविटी हो गया, एजुकेशन हो गया, तो हम स्कूल्स में जाके सिखाते हैं, सो दैट इज एजुकेशन। अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाके स्ट्रेस रिलीफ के लिए काम करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रेस ड्यू टू डेडलाइंस एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहां पे वी स्पेंड 1 hour where they just come and meet the dogs, play with the dogs, release their stress. So that is activities. जब हम therapy की बात करते हैं, तो the focus is on this human-animal bond. That is very important. When we are talking about the human-animal bond, animal is also happy कि वो उस meet करे, and human is also happy that they are meeting. So ये दोनों side के लिए अच्छी बात है. इट इज वेरी गोल ओरिएंटेड, मतलब हमें एक गोल होता है कि हम स्पीच पे इम्प्रूव कर रहे हैं, या हम मूवमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, या हम कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। सो व्हाट आर वी टारगेटिंग? तो ये जैसे हम नॉर्मल थेरेपी होता है वैसे ही है, बट इट्स जस्ट दैट द थेरेपी एनिमल इज द को थेरेपिस्ट। अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द सेशंस हम कुछ प्लान करके जाते हैं कि आज ये करेंगे, बट देन the dog or the animal takes over the session. वो completely वो बच्चे के साथ घुल मिल जाते हैं, and they will just do something very different, but it will achieve the same results. और ये हम teach नहीं कर सकते, we cannot teach the animal that. वो खुद से ही अपने आप समझ जाता है कि वो बच्चे को क्या चाहिए. If the child is thoda scared, then junior especially mirrors the emotions. तो वो थोड़ा स्पेस देगा, थोड़ा शांत बैठ जाएगा, तो he will give the child कि तुम अच्छा मैं शांत बैठ रहा हूँ, तुम आ जाओ, तुम्हारे टाइम से आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ. वो उनके पास नहीं जाएगा, वो उनके ऊपर नहीं चढ़ेगा. कई बच्चे होते हैं who get scared with barking, so he doesn't bark, like it's very, but most of our dogs they don't bark. और ये ऐसा होता है ना कि अरे डॉग है, वो भौंकता नहीं है, कि नहीं वो भौंकता है, बट उसको मालूम है कि वो भौंकेगा तो डर जाएंगे, तो वो he chooses not to do that. तो वो एक चीज है, that the animal is really the co-therapist इसमें. Next point is that we collaborate with the speech therapist, counselor, educator, parents. So all this is a collaborative effort. It's not just कि we will set our own goals, but हम पूछते हैं सबसे कि okay आपके क्या goals हैं, and then how can we help with the animal, because this human animal bond एक motivator की तरह काम करता है. More than anything, it's a motivation for the child to do something. So for example, बहुत सेशंस में ऐसा होता है कि द चाइल्ड विल नॉट टॉक टू द साइकोलॉजिस्ट, वो टीचर के साथ शर्माएगा या पेरेंट के साथ गुस्सा करेगा, बट विद द डॉग इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप. द डॉग इज द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है विद एनिमल्स कि दे डोंट जज. उनके साइड से कोई जजमेंट नहीं होती है कि आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो. इट्स नॉट जजमेंट, इट्स जस्ट एनर्जी. अगर आपकी एनर्जी इज पॉजिटिव, if you're feeling very calm and collected, they will emit that and they will get attracted to that. So that is what makes this animal human bond very important. So when that all happens, and that's how we get into a structured session. So first, we meet, we set a goal, the animal takes into some activities, then there is a collaborative effort. So all this becomes a very structured session, and that's how basically this whole animal assisted therapy works. Moving on to the next slide. So this is a case study that I would like to share. So this is 7-year-old with autism. And उसके लिए goal ये था that we have to make them understand the difference between non-living things and living things. So toys होते थे. So he used to take the toys and he used to kind of उसको स्क्वीज करता था, रफ प्ले करता था टॉयज के साथ. बट देन फिर वो बोलता था कि अरे ये डॉग के साथ क्यों नहीं मैं रफ प्ले कर सकता, बिकॉज उसको लगता था कि टॉयज एंड द रियल डॉग इज द टॉय ओनली. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड ये डिफरेंस, व्हाट वी एक्चुअली डिड वाज टू हेल्प देम सी कि हम ब्रीथ करते हैं, सो like that, and then you can see in the photo also here
the hand is almost in the mouth. Here also the hand is almost in the mouth, right? तो ये क्यों है? Because he's feeling the breath. कि ये एक कर रहा है, उससे गर्म हवा आ रहा है. So this is also a living thing. वो सांस ले रहा है. So ये अभी आप अगर देखेंगे तो थोड़ा रिस्की बिहेवियर लग सकता है क्योंकि ये जानवर के मुंह में हाथ डाल रहा है. It is scary for any parent. You can see the parent here who is kind of like, oh my god, ये क्या हो रहा है? You know, what if the dog bites? तो ये बहुत नॉर्मल है. But with a therapy dog, this is what we guarantee. We know that the dog is trained. हमें पता है कि ये डॉग बहुत ट्रेनिंग करके बहुत एग्जाम्स दे के ही इज कम टू दिस पॉइंट. तो वो काटेगा नहीं एंड उसको ओके है टू टच, to feel the teeth, and all of that. So this is a very safe space for the parent and the child. कि ये safe है. This is a certified therapy dog, so it's safe. My child is safe here. So that's how we kind of taught them this breathing, and then we introduced him to different animals. So soft toys से breathing होता है क्या? उनके मुंह से गर्म हवा निकलती है? तो नहीं, soft toys के नहीं निकलती. So then it's a non-living thing. So that's how we kind of worked on this case. Yeah, so some myths and facts. This is one of the most important things I feel, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है. तो ये this slide is very important for me. So we can do the first one, and I think if you can just type in the chat if it's true or false, and maybe Riddhi, you can help me out by seeing what they're saying. But sure, so the first one is it's just cuddles and playtime with cute dogs. So what do you think, parents? Like, do you think that it is just cuddles and playtime? Do you think this is a myth or it's a fact? तो अगर आपको लगता है कि ये ट्रू है, so write true. Preeti says it's a myth. Yeah. So yeah, I'm not saying that it's a everyone's saying it's a lot of myths. So it is definitely a mix of both. It's a myth, but also it's a fact. मतलब आप है तो cuddle तो कर रहे, dogs तो cute है, dogs के साथ खेल तो रहे हैं, but it is just not that. मतलब वो सिर्फ cuddles and playtimes नहीं है, क्योंकि cuddle तो आप करेंगे ही. The dogs are so cute. रहा नहीं जाता है बच्चों से, वो उनके ऊपर सो जाते हैं, they hug them, they kiss them, वो सब होता है. But what we see is कि वो सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है. हम उसके आगे जाके we do activities, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं that the lady is sitting, वो dog भी है and the child is reading, right? तो ये learning भी हो सकता है with the dog. So ये फोटो में the child is actually showing the dog कि ये क्या है बुक में. So the child is reading वो dog के लिए, right? तो इससे अपने बच्चे का जो reading capacity है that also increases. So definitely वो सिर्फ cuddles और playtimes नहीं है, but it's more than that. It's much more than that. Then we collaborate with various therapists to optimize our goals. So this I just covered in the last slide. Yes, that is something that we do. हम सब speech therapist, occupational therapist, even physiotherapist, हम physiotherapist के साथ भी collaborate करके we can help the child or the senior citizen or the adult to help our goals, right? फिर third one, parents can try animal assisted therapy at home by themselves. तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट वो थेरेपी नहीं होगा, बिकॉज थेरेपी विल बी विद अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हु हैज स्टडीड दिस. आप घर पे एक्टिविटीज कर सकते हैं विच कैन टेक अवे फ्रॉम द थेरेपी. तो आप उसके जो प्रिंसिपल्स है या जो रूल्स है वो मैं आपको जो बताऊंगी आगे, तो दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. हाँ? But that won't necessarily क्या? be
that won't necessarily be therapy. It will just be an activity with the animal. Then if you move on to any pet can be a therapy animal. Yes, I want to know कि आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कोई भी pet dog या कोई भी pet cat एक therapy animal हो सकता है? Can you write in the chat? Yeah, If so I you see think few enthusiastic parents. Anupama has she had already written one is true, 2 and 3 are wrong. Anupama, I would ask yeah. you to, do it with the group so that everyone gets a chance. Preeti is saying that your dog is always therapeutic. What do you think? Can birds be a part of any help? We are going to address the questions later. But yeah, there are few people who say no. It depends on the aggression of pets. Some are not calm, not always. Most of them are saying no. Yeah. So that's also correct. Like what most of them are saying is not all dogs or not all cats can be therapy animals. तो अपने घर में जो डॉग्स होते हैं यूजुअली वो घर वालों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, वो घर वालों के लिए थेरेप्यूटिक होते हैं. आप घर आते हो थक के एंड योर डॉग इज वेरी हैप्पी, वो आपको देख के बहुत खुश हो जाता है, कम्स लिक्स योर फेस, गिव्स यू ऑल cuddles. तो वो आपके लिए थेरेप्यूटिक हो सकता है फॉर श्योर. पर एक थेरेपी डॉग जो होता है वो सबके साथ वैसे बिहेव करना चाहिए या वो सबके लिए सोशल होना चाहिए. सो दैट वे सब डॉग्स कैनॉट बी थेरेपी एनिमल्स या सब एनिमल्स कैनॉट बी थेरेपी एनिमल्स, क्योंकि मोस्टली डॉग्स को अपने घर वालों से ही होता है उतना. बहुत रेयर डॉग्स होते हैं जो सब स्ट्रेंजर्स के साथ जाके दे विल मीट एंड दे विल गेट एक्साइटेड. सो वो थेरेपी एनिमल के लिए भी एज आई सेड बहुत ट्रेनिंग लगती है एंड यू हैव टू पास एन एग्जाम. सो it's very few animals that become therapy animals. So yeah, so most of the people are right. Okay, the next one is children must love animals to benefit from EAT. So this, let me just say that this is not true. Children who love animals will definitely benefit, but जो बच्चे डरते भी है, जो डरते हैं, जो थोड़े shy है, वो भी इससे benefit कर सकते हैं. So we have worked with children जिन्हें बहुत डर लगता था पहले, and then they are opening up to the child, to the dog. तो इस दिन के एक सेशन में ऐसा हुआ था, टू जस्ट शेयर वन स्टोरी इज वेयर दिस चाइल्ड वाज अ 8-year-old चाइल्ड और पूरे ग्रुप सेशन था क्लासरूम में एंड वी डिड अबाउट 12 सेशंस. तो फर्स्ट सेशन में वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि नहीं मुझे नहीं आना है, और कुछ भी मूवमेंट करता था वो डॉग तो शी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि अरे ये किधर जाएगा, ये क्या करेगा. लिटिल बिट अबाउट आफ्टर 2 सेशंस 3 सेशंस जब वो देखने लगी हाँ ओके ये उठ के इधर ही बैठता है या फिर ये वो उसका पट्टा इनके हाथ में ही रहता है तो वो मेरे पास नहीं आएगा, या ये भौंकता नहीं है तो ये सेफ है. तो जब भी द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स पैटर्न्स कि अच्छा ये एनिमल है वो ऐसे ही बिहेव करेगा, सो they are very safe with that. They feel very safe with that. And once they understand that pattern, they can definitely, sorry, Junior, what do you want? Do you want to come down? You want to come down? He wants to come in the frame. Yes, you can come. You can come He down. should be coming to the frame. Yeah, you can see. Hi, Junior. Look, we have Making his our speaker come in, parents. Say hello. Want to say hello? Say hi. Say hi. Say hello. Give me a high five. He's sleepy. He's a little bit sleepy and he's gonna doze off. Okay, you can take your nap. So, always a welcome distraction he is. Yeah. The pleasant one. We are gonna have him come towards the end to answer our questions. Yes, for sure. There are a lot of parents writing that it's a cute lab, so I'm sure the parents are also enjoying. Parents, please invite your children. My daughter is actually peeping into the screen, so invite your children also to say a hi to Junior. Of course, we'll have him again. Yes, for sure, for sure.
So yes, I was saying कि जो बच्चे डरते हैं उनके लिए भी once they get to know कि dog ऐसे behave करता है, they are very okay to then come and pet. बहुत सारे dogs देखते हैं, मतलब street dogs पे अगर देखे रहते तो they will start barking. So children can get scared. If children don't know कि dog का behavior ऐसा होता है, घर पे अगर dogs नहीं है तो उनको पता नहीं होता है कि कैसे बिहेवियर होने वाला है, तो दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर देम टू अज्यूम कि अरे ये तो भौंकेगा या ये तो ऐसे ही करेगा. सो जब उनको थोड़े धीरे धीरे पता चलता है कि दिस इज द बिहेवियर, ये शांत है, ये बैठता है, इनका लीश हाथ में रहता है, सो देन उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है. सो इवन चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर स्केर्ड, इवन अडल्ट्स, सो ऐसा भी कई बार हुआ है कि द चिल्ड्रन वांट टू प्ले एंड द चिल्ड्रन वांट टू पेट, पर उनके पेरेंट्स डर रहे, तो पेरेंट्स बोले नहीं 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 मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो पेरेंट्स रोकते हैं बच्चों को, बट वो बच्चों को तो बहुत पसंद होता है. So that we have worked with the parents also कि पेरेंट्स आप अपना डर पहले भगाइए, फिर हम काम करेंगे आगे. तो इट डज डेफिनेटली नॉट दैट कि उन लोग को प्यार ही होना चाहिए, बट पीपल हु आर आल्सो स्केर्ड डू बेनिफिट फ्रॉम AAT. Yeah, so the next one, then AAT is only for people with disability. So that is definitely not something that is true. It is for everyone. Everyone who just has wants to feel that love of an animal, feel that non-judgmental space. वो unconditional प्यार जो हम बोलते हैं वो animal से आता है. तो वो जिसको भी पसंद है, this is for them. And lastly, AAT is just a trend. So a lot of people have told me कि अरे ये तो एक ट्रेंड की तरह है कि आज रहेगा कल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. This is there from years. इंडिया में भी years है. So it is definitely not a trend, and we'll kind of come to it ki how this helps overall, physically, emotionally, mentally, how it will help everyone. So that's, I think, the crux of it. Yeah, so another case study is there was a child, the 6 years old with both autism plus ADHD. And what we had to do was kind of Sorry, work on Mrunal, I'm gonna interrupt. Hindi, English, please mix रखोगे आप? Yes. Thank Yes, you sir. so much. So what we had to do was कि speech पे काम करना था. So the child वो बोल सकती थी, मतलब she could make आवाजें निकाल सकती थी, पर words बोलना मुश्किल हो रहा था. और मुश्किल हो रहा था क्यों? क्योंकि कुछ मोटिवेशन नहीं था. स्पीच थेरेपिस्ट के साथ काम किया, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के साथ काम किया, टीचर्स के साथ काम किया, बट वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था. सो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग हमारे डॉग के साथ, जब शी स्टार्टेड वर्किंग जूनियर के साथ, फर्स्ट सेशन उसको बोलना था जूनियर का नाम. तो वो जब वो टीचर ने भी जब देखा कि ये लड़की वो ट्राई कर रही है कि उसका नाम बोले, सो दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग. द टीचर हैड टीयर्स इन हर आईज. Everyone was very emotional because that was the first word that she was trying to say. वो बोलना चाहती थी उसका नाम जिसको वो अभी 5 मिनट पहले मिल गया. तो वो बॉन्ड जो फॉर्म हुआ था बिटवीन हर एंड जूनियर लेड हर टू फाइंड दैट मोटिवेशन कि हाँ, मैं जूनियर का नाम के लिए मैं बात करना सीखेगी. एंड देन शी स्टार्टेड लर्निंग की बॉल, फिर जूनियर का लीश, फिर प्ले विद जूनियर, कडल विद जूनियर. तो उसका सब स्पीच सब जूनियर के अराउंड होने लगा. एंड दैट्स हाउ हम लोग ने स्टार्ट किया उसको स्पीच इंट्रोड्यूस करना. सो फोनेटिक्स एंड एवरीथिंग केम थोड़ा बाद में. फर्स्ट आया जूनियर एंड देन उसका उसका सब खिलौने का था. सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यू नेवर नो कि क्या कहाँ क्लिक हो जाए. ये जो ह्यूमन एनिमल बॉन्ड है, इट इज सो डीप एंड इट इज सो इंस्टेंट कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्लिक हो जाएगा. एंड इट इज व्हेन इट हैपेंस इट फील्स ऑलमोस्ट मैजिकल कि ये क्या जादू हो गया. हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं फॉर दिस गर्ल टू स्पीक, एंड ये 5 मिनट में शी सॉ जूनियर. एंड उनका जो रिलेशनशिप है ब्लूम्ड, एंड it was really, really one of the most heartwarming
clients that I have worked with. This is the image of one of the schools that we do therapy at. That's it. Yeah, so coming to what can you do at home, the most interesting thing. So I have just divided this into 4 parts. एक है observing nature, फिर एक tactile toys for sensory support, तो just something that वो touch कर सकते हैं या कुछ feel कर सकते हैं, different feeling sensations जो उनको feel होते हैं. Then we have animal puppets and videos for storytelling, and my favorite is feelings chart. तो I will go through each of them ताकि आपको पता चले कि exactly what I'm talking about. So observing nature. So nature is everywhere for sure. पर हमारे यहाँ पे अभी concrete buildings के अलावा nature is a little bit hard to find. तो I am sure, but we can always see थोड़े चीजें like sparrow जो चिड़िया होती है. We can see them कि वो एक अपन खिड़की में बैठे हैं and we are just observing कि क्या कर रही है चिड़िया, then stick उठा रही है क्या, okay, तो चिड़िया उड़ के कहाँ जाएगी. So this imagination can happen where the child can understand कि oh, this I can think of कि या ये छोटे छोटे चीजें observe करके मैं थोड़ा बड़ा सोच सकता हूँ, थोड़ा imagination story telling ये सब improve हो सकता है. Then my favorite example is this anthill. तो एक छोटी चींटियां तो सब जगह होती है, right? So anthill मिलना थोड़ा मुश्किल है, but you can always observe ants. और you can tell them कि ये communication की जो बात है कि they don't have words, they don't have any language जिसमें वो बात करते हैं, पर उनके लिए communication is just like so इतना अच्छा होता है कि thousands of ants रहते हैं, thousands, और वो इतना intricate घर बनाते हैं and they make a chain. It's so clear, उनका communication इतना clear होता है. So how do you think they communicate? वो कैसे बात करते रहेंगे अपने you know, all the colony of ants. So that is also very interesting to see for children. Another thing is fishes. So interesting fact, ये जो आप fishes है, which are these koi fish, they're called koi fish. और वो भी एक तरह के थेरेपी एनिमल्स या थेरेपी फिशेस माने जा सकते हैं. सो वो उन्हें देखना, लाइक जो डायरेक्शन में वो स्विम करते हैं, दैट इज वेरी सूदिंग. उससे थोड़ा इमोशनल रेगुलेशन होता है, अपन काम फील करते हैं. देयर उनका जो मूवमेंट होता है दैट्स नॉट वेरी फास्ट, ऐसा जुप 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 नहीं होता है लाइक अदर फिशेस. देयर मूवमेंट इज वेरी स्लो, काम. तो उनको देख के ही सर्कल्स, थोड़ा सर्कुलर मूवमेंट होता है, तो जब उनको देखते हैं तब ऑटोमेटिकली वी फील लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड. So that is something that you can definitely do in nature. One of and ये दोनों मेरा favorite activities है. So we call it nature walk. तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैकिंग के लिए जाना है या ऐसे कुछ बड़ा करना है. नो, यू कैन जस्ट गो, आपके बिल्डिंग के नीचे गली में जा सकते हैं. यू कैन मेक दो तरह की चीजें, एक ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं या कलर्स कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स में जैसे आप लीफ, स्टिक, बर्ड, एकॉर्न्स अपने यहाँ पे नहीं होते, बट यू कैन पुट क्लाउड्स, ट्रीज, रॉक्स, फ्लावर. स्क्विरल्स भी नहीं, बट यू कैन से स्पैरो एंड क्रो. स्पैरो, क्रो, पिजन, ये तीन आप कबूतर, ऑल दिस यू कैन पुट, जो आप अपने लोकेलिटी में रखते हैं. सो जब आपका बच्चा देखता है कि ओ मैंने लीफ देखा, ओके टेक, मैंने स्टिक देखा, ओके टेक, तो ये एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बढ़ाता है. इट ऑल्सो गिव्स यू मोर व्हाट यू से लाइक कम्युनिकेशन विद नेचर, कि आप देखने लगते हो कि अच्छा ये कौन सा लीफ है, ये कौन सा स्टिक है, ये कौन सा ट्री है. तो ये थोड़ा ओवरऑल हो गया, बट आप ट्रीज के लिए भी कर सकते हो कि देखो यू नो बैनियन ट्री है या चीकू ट्री है या मैंगो ट्री है, जो भी ट्रीज आपके लोकेलिटी में है आप उसको ये कर सकते हो. फ्लावर्स के कलर्स भी, जैसे ये जो दूसरा वाला है, सो यू कैन जस्ट एक शीट पे आप कलर्स का सर्कल कर सकते हैं, रेड, येलो, व्हाटएवर द कलर्स, और फिर आप उनको बोलो कि ओके आप जाके फाइंड करो. लीफ की ग्रीन शेड्स भी
मॉनसून्स है, सो वेरी ग्रीन एवरीवेयर, तो आप ग्रीन के सब शेड्स का कलर कर सकते हो और उनको बोलना कि एक लीफ लेकर आए जो मैचेस दैट कलर. So this also kind of makes it something unique, something different. और पेरेंट्स के लिए this is just 2 minutes का काम, एक सिर्फ कलर का सर्कल बनाना is a 2 minute work. So instead of sitting at home doing something at home, you can do this outside in nature. थोड़ा movement भी होता है, observation skills भी बढ़ते हैं, and then you are connected with the environment. So this is something that you can definitely do at home. Coming to the second thing, which are tactile toys. So these are some felt toys. So ये जो आप cutouts देख रहे हैं ये felt के हैं और ये सब you can make them. They're very easy. आप you don't have to invest lot of money in that. पर मैंने इसके अलावा एक बहुत easy चीज क्या है कि एक छोटा book, drawing book में I have just put pieces. तो फर का एक टुकड़ा, फिर नेक्स्ट पेज पे एक रबर बैंड स्टिक किए हुए हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे लिटिल बिट डिफरेंट बबल रैप जो प्लास्टिक का अमेज़न के बॉक्सेस के साथ आता है वो. सो ये सब छोटे छोटे चीजें आप सेंसरी के लिए कर सकते हो. सो व्हेन अ चाइल्ड इज गेटिंग थोड़ा हाइपर रेगुलेशन नहीं है, थोड़ा उनको कुछ करना है, कुछ फील करना है, then you can give that book कि ओके हम बुक खोलेंगे, हम फील करेंगे एंड हम विल टेक अ डीप ब्रेथ. फिर दूसरा पेज डीप ब्रेथ. तो ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज विल मेक इट इनटू अ रूटीन, और जब वो रूटीन होगा तब वो और थोड़ा रेगुलेशन बढ़ेगा. द सेकेंड एक्टिविटी हियर यू कैन सी सॉफ्ट एंड हार्ड. तो ये भी दे हैव टू फील. सो पहले आप उनको दिखा के ये सेग्रीगेट कर सकते हो कि थोड़े सॉफ्ट जो चीजें हैं टच के लिए वो एक बास्केट में, जो कड़क चीजें हैं वो दूसरे बास्केट में. फिर सेकंड यू कैन ब्लाइंड फोल्ड, यू कैन पुट अ ब्लाइंड फोल्ड, पट्टी बांध के फिर उनको आंख बंद करके बोल सकते हो कि हाँ आप फील करो आपकी सॉफ्ट है कि हार्ड है. वो जब ब्लाइंड फोल्ड होता है तब वो थोड़ा फीलिंग एनहांस हो जाती. So that is something that you can definitely try at home. These are some animal puppets that we have made. तो जैसे ये पेपर बैग्स है, जो ब्राउन पेपर बैग्स हम केमिस्ट के यहाँ से लेकर आते हैं या कोई स्टोर में जाते हैं तो लेकर आते हैं, तो उसी को बनाया है बटरफ्लाई, एलिफेंट, जिराफ. तो इसमें बस हाथ डाल के then it becomes a puppet. ये थोड़े एक्स्ट्रा है. सो इफ यू हैव कलर्ड चार्ट पेपर तो ये सब बना सकते हो एंड दीज स्टे. मतलब ये आप एक बार बना के यू इट डजंट हैव टू गो, इट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो जैसा आप यूज करोगे दैट वे. फॉर स्टोरी टेलिंग दिस रियली वर्क्स, हम ये बहुत यूज करते हैं. And this is one of the things that I use the most is the feeling chart. तो ये एक बहुत 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 ज्यादा most used chart है where we can ask the child कि आपको कैसा फील हो रहा है. तो अगर if it's a small child तो हम ऐसे तो बनी के जैसे हैप्पी फील हो रहा है, या फॉक्स के जैसे सैड फील हो रहा है, या कैट के जैसे स्लीपी फील हो रहा है, या कोला के जैसे एक्साइटेड फील हो रहा है. सो दिस बिकम्स अ लिटिल बिट इजी कि वो अपने इमोशंस को नाम दे कि आपको कैसा फील हो रहा है, कोला के जैसा फील हो रहा है या बेर के जैसा फील हो रहा है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं मुझे डर लग रहा है, इट इज इजियर टू से कि नहीं मुझे बेर के जैसा फील हो रहा है. दैट वे इट इज इजियर फॉर द चाइल्ड टू एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस कि हाँ मुझे डर लग रहा है, और बताना कि हाँ मम्मी मुझे डर लग रहा है. सो ये दोनों चीजें इजियर हो जाते हैं फॉर द चाइल्ड. इफ इट्स अ स्लाइटली ओल्डर चाइल्ड, मतलब जैसे टीनेजर्स है, तो उनके लिए थोड़े डिफरेंट एनिमल्स यूज कर सकते हैं और थोड़े कॉम्प्लेक्स इमोशंस. जैसे मीर कैट क्या है, एंशियस है, ओवर स्टिमुलेटेड है. सो अगर कोई बच्चा है जस्ट लाइक कि ओके मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं क्या करूं, ये करूं वो करूं वो करूं, तो फिर व्हाट आर यू फीलिंग लाइक, अच्छा आई एम फीलिंग लाइक अ मीर कैट, ओके. तो हमें समझेगा कि ठीक है इसको ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा है, तो हम थोड़ा उसको रिलैक्स करेंगे.
So वो again becomes easier. अगर आपका child is more smaller और इतने animals नहीं पता है तो you can do same animal के different emotions. तो एक sleepy cat है, एक energy cat है, एक sad cat है, something like that, right? So this is something that I feel like parents can do at home. It's easily available to print, and you can even get in touch. I can share these with you. They're definitely something जो हर घर में होना चाहिए. Ronal, the parents are loving this idea. They loved this strategy. I just wanted to seek permission from you. Is it okay if they take a screenshot of the Yes. previous slide? Yes, for sure. They can go ahead, take a screenshot. I can even share this with you the PDF format, so it's easily printable. ये थोड़ा screenshot में शायद वो blur हो जाएगा, so I can definitely share it with you and then you can share it. That will be great. Yes, that will be great. Thank you so much, Ronal. Awesome. You let me know when they're done so I can move on. I think the parents should be able to, and you will give us the PDF. So Okay, so going on to the next one. Yes, so there was a 4-year-old child who was neurotypical, but उनके parents का divorce हो रहा था, so वो बहुत stressed था because 2 घर में जाना था and routine नहीं मिल रहा था. So our goal was to build and follow routine. Now this child already loved animals, okay? तो already उनके घर पे बहुत सारे animals के चीजें थी, जैसे उनका प्लेट हिप्पो का था, टूथब्रश क्रोकोडाइल का था. सो ऐसे आई थॉट कि ओके हाउ कैन वी इम्प्रूव और हार्नेस कि ये जो ऑलरेडी उनका ह्यूमन एनिमल बॉन्ड है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग अ रूटीन फॉर अदर थिंग्स. तो जैसे आपको पता होगा कि रूटीन से हमारा थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है लाइफ में कि ओके सुबह 6 बजे उठना है मतलब सुबह 6 बजे उठना है, ये चेंज नहीं होने वाला. उसके अराउंड मॉम डैड के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, घर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसका रूटीन चेंज हो रहा है. तो जब ये रूटीन सिमिलर होता है एवरी डे, ये एक कुछ टास्क होते हैं जो उसको फॉलो ही करने हैं, तो when that is happening the child is more secure and grounded कि ओके ये मेरा सेफ स्पेस है, ये मुझे करना है, ये मुझे पता है, बाकी सब ठीक है. ओके सो व्हाट वी डिड वाज वी मेड एनिमल्स के हिसाब से एक एक टास्क. सो लियो द लायन गेट्स अप एट 6 o'clock, ये हमारा फर्स्ट टास्क है. तो लियो द लायन का उसके पास स्पेस था एंड गेट्स अप एट 6 o'clock. तो वो फिर who is getting up? Leo the lion is getting up at 6 o'clock. Then we had the crocodile toothbrush. So crocodile is brushing his teeth. So फिर वो the crocodile कौन brush कर रहा है? Croc the crocodile. तो वो crocodile के brush से फिर brush करेगा. Then we came to hippo is having breakfast. So फिर hippo is having breakfast. तो hippo के plate में वो breakfast होगा. Then we'll say that squirrel is doing homework or squirrel is helping with the homework. So when the squirrel helps with the homework, he's like, okay, what am I doing? With the squirrel, I'm doing my homework. तो ये जो एक्साइटमेंट है इवन टू डू होमवर्क कि यार किसी को बताने की यार अब मुझे होमवर्क करना है, तो दैट वाज नॉट इट. या ओके मैं स्क्विरल के साथ होमवर्क करूंगा. तो उसके स्क्विरल का कुछ नहीं था. सो दे गॉट हिम अ पेन. वो पेन ब्राउन कलर का जो अपना सादा नॉर्मल पेन होता है वो, क्योंकि स्क्विरल को ब्राउन ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं. सो ही वाज लाइक ओके ये स्क्विरल का पेन है. तो बच्चों का इमेजिनेशन इतना ये होता है कि एज पेरेंट्स अगर हम थोड़ा क्रिएटिविटी का उसको थोड़ा सा फ्यूल दे दे तो इट विल ऑलवेज लाइक फ्लाई with their imagination. So this was a small snippet of how we made that routine, and then it becomes थोड़ा stability की बाजू में even if the parents are even if 2 घर है उसके 2 घर में जाना है या उसको एक दिन मम्मी के साथ एक वीक डैडी के साथ ऐसा है, बट फिर भी we have that routine which is safe. So that gave him a lot of comfort and knowledge in knowing कि
ये मेरा सेम है, with my animals I am going to have a good day. So that way it kind of build that routine, and he came over that. So that this is one of the case studies that we did. And yes, so some home activities to try. So वो थोड़ा वो चार जो हम लोग ने देखा, that was so definitely there. But these are some home activities जो आप घर पे कर सकते हैं. So how do you feel today? Like I said, वो जो animal emotions chart. So this is also one more example. फिर ये जो है A for alligator, B for bear. These are alphabetical animals. So ये भी you get used to keep that animal in front. वो animal आप अगर सामने रखेंगे तो alphabets, everything we can learn. So ये भी toys है for nature. And again ये बनाया है वो felt से, so it is very easy to get. वो आप बस कट करके you can make. तो मैंने भी ऐसे कुछ किया है which अपने जो candy sticks आते हैं, so उनके ऊपर you just cut a circle, उस पे एक tree draw करना है, and that's how you kind of make की, you know, T for tree, something like that. So these are some विजुअल एक्टिविटीज जो विजुअली आप वो बॉन्ड बिल्ड कर सकते हो बिटवीन द ह्यूमन एंड बिटवीन द चाइल्ड एंड एनिमल्स. Emotional regulation के लिए this is one of the things that we do a lot is animal yoga. तो it's just like जो animals करते हैं, जो physical movements, fly like a bird, so the child will fly like this, okay, roll like a dog. तो हम actually नीचे जमीन पे रोल करते हैं like a dog. और जूनियर भी रोल करता है जो, so actually if our dogs are there in the session they will also roll. So that becomes a fun thing कि अच्छा this is not just stretching या this is not exercise. मतलब जो अगर एक्सरसाइज का नाम दे तो फिर then they'll be like कि नहीं यार ये नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है. But when we say oh let's roll like a dog, you know, it becomes instantly fun कि अच्छा ये sound, this sounds nice. Crawl like a turtle, gallop like a horse. So all these movements are based on animals. And it just, जैसे मैंने कहा, it just becomes fun. Exercise becomes boring, but animal yoga is fun. So even जो schools में हम sessions करते हैं, they are also kind of changed their yoga period to animal yoga. So this works much better than if you just say yoga period or PT period. Yeah, so this is one of the breathing techniques for animals. तो जैसे lion, honeybee, cat, crocodile, ये सब के अलग अलग breathing techniques है. So for lion you see example कि आप फ्लोर पे बैठे, जैसे lion बैठता है अपने चारों हाथ पे पैर पे. Deep breath through your nose and then open your mouth as big as you can and then stick your tongue out. तो हिंदी में भी in yoga it is actually called Siha Pranayam. So ये है actually in yoga also, but it also helps in opening up your mouth and breathing the air out. तो वो जो सब stress है, anxiety है, that just goes like you're trying to exhale वो stress बाहर, जैसा एंड वो सब बाहर जाए. तो विद चिल्ड्रन इट वर्क्स के अच्छा भी अगर आप उनको बोलेंगे कि सिंह प्राणायाम करो तो वो तो नहीं होगा. बट इफ यू से यू नो ब्रीथ लाइक अ लायन या ब्रीथ लाइक अ हनी बी, वो हनी बी के जैसे यू हम लाइक दैट, so that also becomes fun. So these are some of the things that definitely iska bhi if you want I can share you later on for sure. Yes, so this is something sensory जैसे आप touch कर सकते हो. So in the middle one, बीच में इधर animals रखे हैं जो soft छोटे जो पैकेट में animals मिलते हैं, and यहाँ पे land किया है so grass डाला है और यहाँ पे पानी डाला है so sea. तो यहाँ पे वो बच्चे को ये करना है कि land के animals कौन सा है, sea के animals कौन सा है. So it becomes a fun game. Plus it becomes थोड़ा informative also कि okay land पे ये animal रहता है क्या या sea में ये
एनिमल रह सकता है, या सम एनिमल्स जो दोनों में रह सकते हैं, लाइक टर्टल, राइट, दोनों में रह सकते हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? सो ये चीजें अगर आप जब गेम जैसे बना सकते हो, सो दैट ऑल्सो becomes like a fun activity to do. One more thing that I always do is this animal toys जो होते हैं, so वो बहुत हल्के होते हैं usually, they're very soft and light. But what I do is आप उसको पीछे से जहाँ पे स्टिचिंग है वो ये करके you can just put some stones in it, जो pebbles रहता है ना, we put that and वो stitch कर लेना बाद में, so it becomes थोड़ा heavy. तो जब ये weighted animal toys हम use करते हैं बच्चों के साथ, तो वो थोड़ा एक उनको lively feeling आता है, where they are kind of कि oh this has some sort of importance. तो जब वो रात को उसके साथ सोते हैं, तो it becomes like a weighted blanket, a way, sort of weight which gives them that pressure, और फिर वो better feel करते हैं with that sensation. Another, this child has done a very nice thing. तो उसने फार्म को डिवाइड किया है, यहाँ पे घास है, यहाँ पे लाइक सूखा घास है, यहाँ पे there's green grass, there is chickens here, so ये सब toys है, but he's divided that into 3 parts. और फिर वो उनका ध्यान रखता है, so उनको खाना देना है सुबह, फिर काउस को घास देना है, पिग्स को उनका खाना देना है. So that way it helps with taking care. तो हम responsibility जो बोलते हैं, या एक पेट डॉग है तो वो डॉग को मतलब टॉय को खाना खिलाना है, या टॉय को हम वॉक करने लेके जा रहे हैं, या टॉय को हम खेल रहे हैं उसके साथ. So something like that. So it develops a sense of responsibility towards those animals. In the social part of it, this is one of the biggest games that you can play, is the vet clinic. So it's like you can make this whole board कि ये कौन सा animal है, it's a snake, it's a mouse, it's a bird, फिर उसको कुछ इंजरी हुआ है हाँ या ना, फिर यहाँ पे ड्राइंग है कि कौन सा इंजरी, किधर इंजरी हुआ है, पैर पे हुआ है तो ये पैर पे बैंडेज है, फिर क्या लगा है, बैंडेज लगा है, दवाई दिए है, इंजेक्शन दिया है. सो दिस बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी प्ले जो हम बोलते हैं, लाइक प्रिटेंड प्ले, राइट. सो टेम्परेचर चेक करना, शी इज पुटिंग अ बैंडेज. ये अभी बहुत इलेबोरेट हुआ है, मतलब इतना सारा एग्जाम रूम, रिकवरी रूम, ऐसे सब, बट वी कैन मेक इट स्मॉल, वी कैन जस्ट डू इट विद अ बैंड. And we can do like a thermometer, we can do with a band-aid, तो वो सिर्फ वो टॉय को लगा सकते हैं. तो all this also kind of helps your imagination, helps your social skills. When you talk about social skills, कि आप कैसे अपना communicate कर रहे हो, कि okay then आप अगर उनके पेरेंट हो तो हाँ डॉक्टर मेरे डॉग को क्या हुआ है, हाँ ओके ये हुआ है, एंड अच्छा फिर आपने क्या किया, तो अच्छा मैंने ये बैंडेज लगाया है, अच्छा कैसे बैंडेज, कितने बार दवाई देने का. सो उनके लिए भी वो एक प्रोसेस हो जाता है टू थिंक दैट मच, कि अच्छा अभी ये डॉक्टर क्या बोलेगा, या उन्होंने देखा होगा कि डॉक्टर हमें कैसे इंजेक्शन देता है, फिर दे वुड रेप्लिकेट दैट. सो वो एक सेकेंडरी लेवल का जो प्रिटेंड प्ले होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन देयर सोशल स्किल्स and thinking like that. Yeah, this is one of the last case studies. So there's a 14-year-old child with autism who was non-verbal. तो उसका गोल था to improve communication and speech. So जब हम communication and speech को देखते हैं, तो autism is you can say ना communication जो lacking होता है, that's the main thing. So what we tried to do was कि for him to communicate like helping with the dog. ठीक है, तो अगर डॉग को कम्युनिकेट करना है, डॉग भी वर्बल नहीं करता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करता. सो हाउ डज द डॉग, अगर डॉग को खेलने जाना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, अगर डॉग को वॉक के लिए जाना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा. सो ये सब चीजों को लेकर वी काइंड ऑफ टॉट द चाइल्ड दैट this is how you can also find a good way आजा of गोल गोल लड्डू बनाए. ऐसा आजा नहीं,
ऐसा नहीं है कि you have to say a few words or if you have to use an app or you have to do other things, but you can find your own way because this child was already 14 years old. तो उसमें वो creativity था. So what he did was कि उसने उसके खुद के फ्लैश कार्ड्स बनाए which he then used. तो वो भी एक creativity है where he put his own skills into it on how to communicate. So that is one very good thing. And in this photo, you can see that the child is sleeping on Junior, and Junior is also sleeping. तो ये एक comfortable position है. तो वो actually उसका heartbeat सुन रहा था यहाँ पे सो के, and the other children are kind of waiting. This child is holding the belt. तो वो belt के ऊपर crayons है बहुत सारे different colors के. So the child is actually counting the crayons as well, like which is his favorite color and all that. So there are a lot of things going on in this one single image. And when every child is doing something with their own, और फिर वो junior के साथ उनका private moment कर रहे हैं, भले ही वो साथ में है, but they have a special moment going on, all of them with junior. So that is very special, how we kind of get into this. Lastly, I'm so sorry, Mrunal. Just give me 1 second. I'm going to mute the parent. I guess they are muted. Yes, Mrunal, please continue. I think, Mrunal, sorry, I guess you also have been muted. Parents, can you hear Mrunal? just Parents, play I the would video. please ask you. Yeah, okay. Yeah. Yeah, I think, sorry. Yeah, so Mrunal, we have 10 more minutes and then we'll go on to the questions. Yeah, so just this is our Instagram handle. If you want to see कि what work we do, हम कैसे you know, with the therapy dogs and therapy cat also now coming up, how do we kind of work with children, senior citizens? So you can definitely follow us on Instagram. And if you want to get in touch, this is my number, and you can send us an email, and would love to hear from you. Hello. Have you come to say hi now? Have you come to say hello? Yes, Junior. Sit. Good job. Junior also is saying. The presentation is done and now it's his time to come. I'm gonna stop sharing so that all of us can see Junior. Yes. Yeah. Okay. Sure. So yes, you want to interact with Junior so that the parents can see it for next 2 minutes probably. Oh. Give it back. One more time. Yes, thank you. Good job, Junior. Yes. Good boy. Junior, speak. Junior. Yes. Oh. Yeah. So Okay. we can do the questions for sure now. If everyone's okay. Yeah, so thank you so much, Mrunal. This was very interesting. Every single point that you said as a special educator, I could resonate. I saw many of the parents actually, talk and resonate with the strategies. In the interest of time, we are really going to run towards the questions and let's read. There are many parents who requested and asked if there were animal therapeutic centers in Bangalore, in Pune, anything that you know of that you would want to share? Yes, so there are a lot of organizations doing this. Animal Angels is one of the
oldest organizations in India. So they have centers in Pune, Bangalore, Delhi. You can definitely get in touch with them. I have also learned from them, so I can vouch ki their animal therapy teams are really good. So in Pune, Bangalore, you can go for Animal Angels for sure. In Ahmedabad, we have Woofer Snow and Sky. So if anyone is in Ahmedabad who wants to try, so there's Woofer Snow and Sky as well. So these are two organizations that I can personally vouch for sure. Yes. Great. I hope parents y'all are making a note of this. Sanna has asked, can birds be of any help? For sure. So again, birds का भी exam होता है. So some animals, horses, dolphins, rabbits, yeah, we have hamsters, guinea pigs जो होते हैं. Some animals can become therapy animals, but उनके एक process होता है, training होती है, exam होता है. So the birds also have exams. Yes. Yeah, I remember you mentioning it. I had asked this question and I was really interested to know, are there particular breeds of dogs or cats who are more social versus the others? For sure. तो definitely ऐसे breeds है like golden retriever या labradors जो people pleasing ज्यादा होते हैं. But end में it is the personality of the dog. जो individual personality होते हैं. मैंने देखा है कि Rottweiler dog भी therapy dog हो सकता है. एक indie dog भी therapy dog हो सकता है. एक golden retriever को भी aggression हो सकता है. सो वो जो डॉग की पर्सनैलिटी होती है खुद की कि दे वांट टू बी सोशल टू एवरीवन या सिर्फ उनके फैमिली मेंबर या सिर्फ बच्चे या फिर अडल्ट्स सो इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द डॉग rather than कि एक breed. Makes sense. And what about children who show no interest or, they are not very social to the animals? Like they are not friendly also. They are kind of cruel to them. Yeah. So there has been couple of instances where उनको मस्ती करनी होती है तो वो कान खींचेंगे या पूंछ खींचेंगे. But that I see as an opportunity. कि okay, how can I make this child be more empathetic to the animal? Because when they're children, we can definitely mold their thinking. कि this is the right time to make the child understand कि this is not something which is a nice thing to do. Why did you do it? डू यू थिंक के वो बेजुबान है इसके लिए ये करना था या व्हाट इज द मोटिवेशन और फिर जब हमें वो रीजन पता चलता है तो वी कैन काइंड ऑफ मेक हिम अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग उनको भी हर्ट होता है दे आल्सो फील पेन दे आल्सो फील सैड यू विल सी के जो थेरेपी एनिमल्स है जूनियर कोबी जोई ऑल ऑफ देम जब भी वो एक सेशन करते हैं जो जैसे एक थेरेपिस्ट एक सेशन करता है जो थोड़ा इमोशनली हैवी होता है हम भी थक जाते हैं मेंटली द क्लाइंट आल्सो इज टायर्ड द थेरेपिस्ट आल्सो इज टायर्ड द डॉग इज आल्सो टायर्ड वो 2 घंटा एक्स्ट्रा सोएगा सो उनमें भी एक एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो स्ट्रेस उनमें भी होता है so that pain the emotions the sadness all that happens with that so I feel like Yeah. kids who are in that space we can definitely uh, have that opportunity to teach them okay this is something that's wrong. I love that. That's a very good perspective. We are actually making this as a teachable moment for the children, bringing that empathy, the emotion again for the children. That's really good. What are the basic things one needs to look into to determine if their pet can be a potential therapy animal? Oh, very good question. So I have trained now 3 therapy dogs. So with that, it's basically firstly कि your dog is social. उनको सब people लोग पसंद है and everything. Then you can say कि वो trained है basic obedience मतलब sit, stay ये सब basic चीजें आती है. Aggression के कोई signs नहीं होने चाहिए मतलब barking, growling या आप उसके मुंह से कुछ निकाल रहे हो. So all those aggression behavior should not be there. But ideally वो social behavior जो होता है social factor जो होता है that is more important in the animal. Yeah.
Great. There were many parents who actually loved the entire feeling chart and all of it. I'm just skimming through the comments and I'm just reading it. And I agree, these were all amazing strategies that they can use, even if you all don't have animals at home. So you don't have to have animals, parents, to, use it as a therapy. Any presence in Noida? I think Animal Angels have one team in Noida or Delhi. I'm not sure. They उनका Instagram handle is Wiggly. He's a Cocker Spaniel, बहुत क्यूट डॉग है और वो एक डेंटिस्ट के साथ काम करता है, तो उनका डेंटल क्लिनिक है और ही इज अ डेंटल असिस्टेंट थेरेपी डॉग। तो जो बच्चे डेंटिस्ट के पास डरते हैं उनके लिए वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वो डेंटल चेयर में जाके बैठ जाता है उनके लैब पे व्हेन द होल थिंग इज। Great. I think it is to reduce the anxiety. That's really great. What about the meltdowns in autistic kids? Would animal therapy work for it? Yes, definitely. A lot of children that we work with have autism. So in sessions, have been meltdowns, there have been issues with controlling emotional regulation. So, just as I said, our dogs kind of mirror the energy. So the dog will go and lie next to next to the child. And even if the child is having a meltdown, banging something or anything, the dog is so calm that it kind of helps with the anxiety. So what we do is even petting the dog or keeping the head on the dog's belly. So wo jab belly rises, falls with the breathing, that also helps. And the techniques that I shared, like breathe like a lion or move like a snake, some things that will snap the child out of it. I feel like those things also kind of help in controlling meltdowns. Yes, I also wrote it in the chat at that time that slide which you shared was really good. I'm sure that would help for their meltdown management. Many parents again have asked for different areas. I'm going to actually list it down. Hyderabad, Bhopal, Bangalore, Thane. These are the places that parents are looking out for therapeutic, interventions. Any of the places that you know of. I think we are going to compile all of these information, post the session and share it with your parents. For now, moving on, how can we use fish for therapy? Ronal, I know you've already mentioned about the movement. Anything Yeah. else besides that you want to add in? Yeah, so fish, when you have a fish tank at home, so you can involve the child in the maintenance of it. तो खाना खिलाना है या फिश टैंक क्लीन करना है, ऑल दीज डेली मेंटेनिंग रिचुअल्स की फिश टैंक के जो प्लांट्स होते हैं या इवन द स्टोन्स यू कैन रीअरेंज, मेक अ कोजी होम, तो ये सब चीजें हैं, यू कैन डेफिनेटली हैव द चाइल्ड इंटरेक्ट। वो फिश की स्पेसिफिक ब्रीड क्या है, it's a tiger tail fish, या it's a guppy fish or whatever the fish is, you can research more about it. पर जो free flowing fishes होते हैं, like I said, they have a little bit different movement, और जो koi fishes होते हैं, they have a little bit different movement. तो it is proven that the koi fish का जो movement होता है, that is therapeutic, क्योंकि वो थोड़ा circular होता है और slow होता है, it's not fast. स्लो मूवमेंट में हमें थोड़ा रेगुलेशन होता है। सो फिश फॉर थेरेपी आई वुड रेकमेंड कि कोई फिश, या इवन अगर आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे ऑफ कोई फिश, दैट विल आल्सो हेल्प फॉर श्योर। Can you just help us spell it out so that all of us are on the same page? Do you want to just name the... KOI. Say that again. AOI. KOI. Fish. Okay, Yeah. perfect. I'm just going to Yes. put that for the parents' convenience there. Is there a place that trains pet dogs to be therapy dogs? Yes, we do. We do that. So I'm based in Mumbai. I work in like Thane, Navi Mumbai areas as well. So for sure, if they're in Mumbai area, we can definitely get in touch. Correct. So PS, I don't know the name of the parent, but yes, PS, if you are from Mumbai, you can definitely get in touch with Mrinal ma'am. We are going to share the contact details. Sometimes kids don't know how much pressure to put while cuddling the pets. How do you handle that?
Right. So that is a very good question because that is something that we deal with in every session. Children नहीं, even adults, उनको भी पता नहीं होता है most of the times कि कितना pressure डालना चाहिए. But what we do is we use our hand and then we show them कि this is the pressure. This is the pressure. Even on the dog, कि उसका skin बहुत अगर दब रहा है क्या? You can feel the skin going inside. तो ये too much pressure है. So with children, because it is difficult to explain with words, we hold their hand like this and then we will try to see कि कितना pressure is enough. So as a handler for our therapy dog, हमें अपने dogs का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए. So sometimes dogs also get tired. They also get burned out. So उनको अगर बस हो गया है सेशन दे आर टायर्ड सो उनके लिए भी वी विल टेक अ स्टैंड के ओके नो अभी ये डॉग इज टायर्ड सो अभी हम सेशन कल करेंगे सो that is a responsibility as a handler as a therapist that I have to take care of the dog that I'm working with. Great, interesting. Parents, I hope you guys have gotten whatever questions you all had. Hello. All the yes, Mrunal, we can hear you. I guess there is a lag from Mrunal's end, but yes, Mrunal, we can hear you. Can you hear us? Yeah, now Okay. Perfect. So yes, whatever questions we had, we've got them answered. I think this was a very interesting session. I was personally very excited to have you, and I really want to take a moment to thank you, Mrunal. Thank you so much for making in. Thanks to Junior as well for just coming in the right time and showing his presence. It was a pleasure having you. On behalf of the entire Samarthya team, I really want to thank you, parents and Brudal, to join in and have this like very beautiful, informative session. Parents, we will definitely share all the resources that we promised, the PDF, the contact informations, the therapy center informations with you all shortly. And with this, we can end this webinar. Thank you so much, parents, again. Thanks, Nodal. Thank you so much. Yes, thank you so much for attending. Thank you. Bye bye. Yes. Bye. Bye, everyone.